Assistant Professor, Sigma of Engineering. Welcome you all to the webinar on Android programming. It is organized by the Sigma of Engineering. Sigma of Engineering is one of the premier engineering institutes of Gujarat, imparting high quality technical education and offers wide range of various courses and programs, which includes Diploma Engineering, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, and Master of Business Administrations. To enlighten us with Android programming, we having amongst us Mrs. Mansi P. Joshi. She is a senior technical trainer from the TOPS Technology. Ms. Mansi Joshi is passionate Android PHP trainer with having more than 6 years of experience. She has a good knowledge of core Java, digital marketing, and manual software testing. She is highly experienced in training environments and also highly productive, committed, and result-driven members in team and individual projects. She delivers training in various level of members on web and mobile technologies. She has an expertise in providing training customized according to the client's requirement with excellent feedback record. She has trained more than 800 students plus a mix of experience in IT individuals and students looking for the placement projects like a handicraft shop, then A to Z Pro, like it is manages directories, social medias, and e-commerce shopping all in the one. Now we can hear from the Mansi ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Let us start with our main content, which is the Android programming. First of all, good afternoon, all of you. Let me start with the Android programming. So first we'll discuss that is first we'll discuss the Android programming. Right. See, in the Android programming, we have supposed to develop the mobile application, right? So we are any of the application that would be the two part. One is a code part and the another one is a design part. Right. So in the Android programming, the code part will be handled by the core Java, or we can say Java or a Kotlin. Right, and the designing in the form of XML. So for this Android programming, we have a editor, or we have a platform on which we are supposed to develop our application, which is called Android Studio. So let's start our programming with the Android Studio. We are supposed to create a new project. We are supposed to open a click on the file menu, open a new, click on the project. These are the different layouts of any of the activity. Now the question comes into the mind is, what is activity first? Right. So activity is nothing but the one screen of your application. Right. If it is supposed to koi web application hai, then it can be considered as a web page. But for the mobile application, it can be considered as an activity. So when you start a new project, you're having a different number of activities over here. See, Android Studio providing us the list of different activities which perform the actions and the events according to the requirements. We have the list of the activities like, let's say, fragment activity, tab activity. Then we have a Google Map activity, GPay activity, right? So, but as an initial basis, we always start up with the empty activity. So now click on the empty activity and click on the next button. Here we have to provide some basic configuration of your project. The first of all, the name of your project, that is I have to specify any of the name of my project. So according to the name of the project, the package will be created automatically. This is the third portion, that would be the save location on which your application must be saved. The language, by default language is selected by the Java, but if you are good and if you are able already develop 2 or 3 application in Android with respect to Java, then you can choose as a Kotlin. See, Kotlin is also a lightweight
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ही कंसेप्ट को वो फॉलो करता है, बट इट हैज अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो बेसिकली एज अ इनिशियल लेवल आई क्लिक ऑन द लैंग्वेज जावा. This is the form of the minimum SDK version. This is the where your application supposed to be installed, right? Minimum device configuration on which this API is your install. So I am selecting the API 22, which is a lollipop version. Here you can find, you can able to see the approximate device in the terms of percentage. जो भी device support कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा. If I'm supposed to select API 29, then it gives me only the 50% of the device. So I'll choose the maximum device, which is API 22 lollipop version, and click on the finish button. We must have to wait till the Gradle building process is supposed to be completed. Now, what do you mean by this Gradle building process? See, as we know, in the application, there are lots of configuration is supposed to be handled, taken care of by the studio, right? So this type of basic configuration, my application configuration with my XML, with my different libraries. So for that, we have to wait till the Gradle process is completed. Let me explain you. Once the Gradle process is supposed to be completed, you are able to see a one Java file on your system, on your screen, and one XML file on your screen. See, XML file is the process, is the layout, right, on which you are supposed to be design your application. So first of all, I'll explain you the folder structure, the important part of the Android Studio. If you are good, or if you are very much clear with the folder structure, then you are able to develop application easily. Basically, we have a main two folders. What we can say, one is a Java folder and the second one is a resource folder. In the resource folder, you are able to see this drawable folder, layout folder, map folder, and the values folder. So drawable folder is the folder in which your external images, you can download it and copy it into that particular file, or इंटरनल जो भी हमारी वेक्टर इमेजेस है, जो भी पीएनजी इमेजेस है, कुछ भी अगर एक्सटर्नल डिजाइनिंग फॉर्मेट लेआउट के लिए आपको जो इमेजेस आइकन्स वगैरह यूज करने हैं, दैट यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई इनटू दिस ड्रॉएबल फोल्डर. Layout folder is the folder where every designing layout must be there. So as and when you are adding a n number of activities according to that Java and designing file, both are created, and the designing file is supposed to be stored into the layout folder, and the Java file is supposed to be stored in this Java folder. Now you can see this mipmap folder. Mipmap folder के अंदर आपको दिखेगा बेसिक हमारा जो IC launchers images है, राइट. बाय डिफॉल्ट हमें जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करके इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ HDPI, MDPI, हर एक फॉर्मेट के अंदर वो हमें मिल रही है. सो द मिपमैप के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो कि GIF या PNG images, if you want to specify some small sort of images, then you can specify over here. Then you can find out the value folder where you can have two files, the color.xml and the string.xml. Basically in Android, the in Android, the color will be in the form of the hexadecimal array, hexadecimal format. So यहाँ पे जो होता है, that is आपको कलर का कोड याद नहीं रहेगा. So for that you have to specify some user defined color property or a user defined color tab. So here is the file in which you can define your own color so that the consistency of the application remains same, right? If any one of the digit अगर आगे पीछे हो जाएगा, the color reflection will be the different. So वहां पे आपको एक consistency maintain करने के लिए हम color.xml के अंदर user defined color create कर देते हैं, so that everywhere it will be reflected into my system as and when I need it. For that I am specifying this code. Let's say this code is a white code, but यहाँ पे जैसे मैं click कर रही हूँ, I can get the color platter. Now this color platter is having the different number of shades,
gradients and all. According to your choice, you can select any of the color pattern, right? So I'll just choose with this color. It will be automatically assigned over here. सेम वे जैसे यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड कलर प्रॉपर्टी बनाई है, वैसे आप यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग बना सकते हो. जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आता है विच इज ऐप नेम, राइट, जो हमने डाला हुआ है. सो वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आ जाएगा, राइट. So this is the resource folder where the designing related content will be stored. This is the our main business logic file, or we can say the Java file, right? It extends your app compact activity. App compact activity is a main super class in which all the method is supposed to be there. This class extends this method, and based on that app compact activity, we are supposed to figure out the different functionalities. Here is the line that is set content view. Basically, set content view is the function, right, which is already defined in this super class, right. उसके अंदर already defined है, उसका इस्तेमाल करके हमें क्या कर रहा है वो, that set content view is supposed to load your designing file. This supposed to be load your designing file into your app folder, right. So the set content view is used to display your layout into the app folder. So this is a basic structure. The very important file of the XM Android is the manifest file. A manifest file is the file where you can find out all the configurations regarding your application. So जब भी आप बनाते हो तो वो by default वो manifest file आ जाती है, right? अब ये manifest file के अंदर configuration किया हुआ होता है. एक होता है that is allow backup, true या false आप कर सकते हो. You can set your backup device of your application. Icon बाय डिफॉल्ट आपका जो भी आइकन रहेगा, जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला आइकन आईसी लॉन्चर के अंदर, विच कैन बी फाइंड आउट ओवर हियर. मैप के अंदर है आईसी लॉन्चर. बाय डिफॉल्ट दिस आइकन इज सपोज टू बी प्रोवाइडेड, राइट. वो यहाँ पे रहेगा. लेबलिंग रहेगा, राइट. लेबल दैट इज हमारा जो हमारा ऐप का नेम है, दैट कैन बी कंसिडर एज अ लेबल. Round icon, again that would be in the round shape. So the activity by default, whatever the created, वो यहाँ पे आ जाएगी, configure हो गए. So this is the manifest file, right, कि जहाँ पे आप, ये तो basic configuration हुआ, right. अब वो basic configuration के साथ अगर आपको external permission वगैरह डालनी है, तो वो सारी एक्सटर्नल परमिशन आप यहाँ से डालोगे. जैसे एक्सटर्नल परमिशन हो गई, जैसे एक कैमरा की परमिशन हो गई, स्टोरेज की परमिशन हो गई, रिट्राइव डेटा की परमिशन हो गई, राइट. सो दिस कैन बी फेच्ड, दिस कैन बी आप वो सारी परमिशन को यहाँ से आप अलाउ करोगे, राइट. वो सारी एक्सटर्नल परमिशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी रहेगी. सो दिस कैन बी योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल. सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर एंड्रॉइड स्टूडियो folders. Now we are moving ahead. I am going to add one activity. So for adding an activity, what should I do? I'll click on my Java file, जो हमारा पैकेज है, वहां पे मैं राइट क्लिक करूंगी, क्लिक ऑन न्यू एक्टिविटी, एंड इट इज एम्प्टी एक्टिविटी. नाउ एम्प्टी एक्टिविटी मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, दैट इज स्प्लैश स्क्रीन. While you are naming your activity, it must be, आपका जो भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी एक्टिविटी का नाम है, it must be start with the capital letter only. Then click on the finish button.
the activity is supposed to be created. And at the same time, the Java file is also created and the designing layout file is also created. दोनों आपकी यहाँ पे वो create हो जाएगी. Now, what is the splash screen? What is splash screen? सी कोई भी आप जब भी आप लॉन्च करते हो ऐप, ठीक है, वो ऐप लॉन्च करने के टाइम पे आपको इनिशियली कोई लोगो मिलेगा and after some seconds your home redirection will be there, so that can be considered as a splash screen. So वो splash screen activity हम यहाँ पे पहले बना रहे हैं, right? यहाँ पे जो splash screen activity हम बना रहे हैं, that is with the help of different animations. For this I am using the Loti animation, right? So for the Loti animation, what you need to do is you click on the browser, lotifiles.com, search करो आप. This is the site where you can get your images, right? अब वो images आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करोगे, वो सारी चीज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे. अब जैसे ही आप लोटी इमेज डाउनलोड करोगे, you have to log in with this Lotify, right? I'll log in with this my mail ID. Then I can, whatever the animation I'm looking for, वो मैं यहाँ से search करूंगी, right? If I'm looking for some loading animation, options, Seems to be a network issue. She'll join back in a few moments. Please stand by. Ma'am, you're not audible. If you're speaking, you're not audible, ma'am. okay. Hello. Yeah, now Am I you're audible audible. now? Yeah. So we are supposed to download this Loti JSON file, right? If you want to change the color, background color of my animation, then I can change it from here, right? So I'll just download this Loti JSON file. And for this, I have to
add some external dependency into my project, right? So which kind of dependency that I'm supposed to pay add is this Loti animation version and the external file of this animation. So where should I add this external files? Into Gradle scripting, we have two options. One is project building and one other is a module building. In the module building, you have to add your external dependency regarding any of the services that you are using. So that dependency you must have to add into this dependency array of your application Gradle building. Now, whatever the changes that you are made with this, you must have to sync your Gradle file with your APK. We have supposed to wait till this synchronization is supposed to be completed. Now it is completed. Now what should we do next? We must have to design our screen. Here by default, you can get the constraint layout. We must have to change this layout with the linear. There are so many different layouts are there: linear layout, constraint layout, coordinator layout, grid layout. According to your requirement, you can use any of the layouts. So I'll change my layout constraint to linear. If I'm using linear layout, I must have to specify the orientation property. By default, the orientation of the linear layout is horizontal. If I'm not supposed to specify the vertical, the element is not supposed to be displayed on my screen. Now here I'm using this Loti files animation view. The width that I'm specify is match parent. Match parent is a property. आपकी जो screen की width होगी उसके accordingly वो width रहेगा. Height is supposed to be wrap content. Right, that we must have to specify it. Then we must have to specify our हमारी जो एनिमेशन हमने जो डाउनलोड की है उसको मुझे वहां पे प्लेस करना पड़ेगा. दैट आई मस्ट हैव टू स्पेसिफाइड ओवर देयर. I must have to specify with the ID first to bind my element. See, ID is a property from which you can bind your XML layout to your Java file. So whatever the elements that you are supposed to be use, अगर आप text box use करते हो, radio button use करते हो, जो भी हमारे designing elements आते हैं, right? Fab button है, adapters है, list view है, कोई भी हमारा designing element होता है, आपको compulsory उसकी ID property set करनी पड़ेगी, through which you can find it out the binding with Java and along with the like your Java with the XML file. So वो वहां से आप उसको bind कर सकते हो. I can right now Loti animation view, we have to specify height, width, ID, file name, looping, and autoplay. This three content that we must have to specify. So I'm specifying a looping
that is true. Autoplay true, then loop true, right? This both property I must have to specify true along with a file name. Now अभी हमने तो फाइल नेम जो डाउनलोड किया है वो तो डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर है, हमें उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द असेट फोल्डर, राइट? अब असेट फोल्डर हम कैसे बनाएंगे? ऐप में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, फोल्डर, असेट फोल्डर. यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगी, राइट? टारगेट मेन ही रहेगा, फोल्डर लोकेशन असेट ही रहेगा, एंड क्लिक ऑन फिनिश्ड. असेट फोल्डर यहाँ पे बन गया. अब हमने जो फाइल डाउनलोड करके रखी है वो मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा. सो डाउनलोड्स में हम जाएंगे, जहाँ पे हमने लोटी जेसन की फाइल जो डाउनलोड करके रखी है वो हम कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे. यहाँ से मैं उसको कॉपी कर रही हूँ, रीनेम कर देते हैं फर्स्ट, दैट इज anim.json, राइट? इसको मैं कॉपी करूंगी एंड स्टूडियो में जाके असेट के अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे. इट गिव्स मी द रीफैक्टर. ओके, ये फाइल के अंदर हमें कोई चेंजेस करने नहीं है, बट दिस फाइल नेम वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर. राइट? कौन सी फाइल नेम है? दैट इज anim.json, राइट? तो ये फाइल यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर होगी. ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया है, हमने इसका डिजाइनिंग ही किया हुआ है. अभी इसका हमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका कोड करना है. तो वो अभी हम कोड करेंगे. /screen activity.java फाइल. अब ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो एक्टिविटी क्या करेगी? तो वो एक्टिविटी डिले को हैंडल करेगी. तो मैं यहाँ पे करूंगी हैंडलर डॉट न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट. डिले. यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा क्या? तो न्यू रनेबल इंटरफेस की रन मेथड आपको यहाँ से क्रिएट करनी पड़ेगी. यहाँ पे आपको सेकंड पैरामीटर पास करना पड़ेगा, दैट इज हाउ लॉन्ग इट मस्ट बी स्टे ऑन योर स्क्रीन. तो मैंने यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड्स डाला है, दैट इज 3 सेकेंड्स तक वो वहां पे रहेगा.
अब मुझे क्या करना है, ये एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मुझे रीडायरेक्ट करवाना है. सो फॉर द रीडायरेक्शन वी आर यूजिंग इंटेंट, or we can say intent is used for passing the message between two activities, right? Intent equals to new intent जिसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा. फर्स्ट पैरामीटर रहेगा आपका सोर्स, मतलब करंट एक्टिविटी, डॉट दिस. दूसरा पैरामीटर रहेगा डेस्टिनेशन, आपको कहाँ पे ले जाना है. सपोज मुझे ले जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे. उसके बाद यू हैव टू डू द स्टार्ट एक्टिविटी जिसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा इंटेंट. नाउ दिस इज हमारा ये कोड हो चुका है. अब ये कोड रन करवाने के लिए, जैसे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी, एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज रहेगी, ठीक है, बट कौन सी एक्टिविटी मुझे पहले रन करवानी है, या तो कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे रन करवानी है, फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस इंटेंट फिल्टर्स. सो इंटेंट फिल्टर कहाँ पे होगा, आपकी मैनिफेस्ट फाइल में होगा. इंटेंट फिल्टर एक ही होना चाहिए मैनिफेस्ट फाइल के अंदर. मुझे रन करवानी है ये स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी. यहाँ पे एक्सपोर्टेड है, जो फॉल्स है उसको मैं ट्रू कर दूंगी, राइट, और यहाँ पे मेरे इंटेंट को मैं लोड करवा दूंगी. नाउ यहाँ पे आपके डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे. My advice is always test your application on the real device, right? Because यहाँ पे ABD through आपको virtual device मिलेगा, but sometimes it won't be executed properly. Though your code is correct, but sometimes it won't be executed properly. So I have connected my real device over here with my USB cable and just click on run application. Now it will take some time to run the application. जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, विल डिस्कस सम फर्दर टॉपिक्स which is one of my favorite offline databases. Now before we start with the offline databases, can I'm discuss what is database. What is database? A database is what we can say in the easiest term, the collection of tables, that is called a database, right? अब table होता क्या है? What is table? The collection of what we can say records, row and columns that can be called as a टेबल्स. ठीक है, तो हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर दो तरह के डेटाबेसेस अवेलेबल है, ऑफलाइन डेटाबेस एज वेल एज ऑनलाइन डेटाबेस. अगर आपकी एप्लीकेशन ऑफलाइन डेटाबेस से बना रहे हो, इट वोंट बी रॉन्ग, राइट. वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ लोकल सिस्टम में रहेगा, मतलब आपके डिवाइसेस में रहेगा. सो जैसे ऑनलाइन डेटाबेस में होता है कि भाई कंटेंट रिमेनिंग द सेम in each and every devices in which your application is supposed to be run. तो वहां पे सबको एक सिमिलर कंटेंट दिखेगा. दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस विद द थर्ड पार्टी लाइब्रेरी रेट्रोफिट, वो हम वहां पे करते हैं, ठीक है. बट ऑफलाइन डेटाबेस के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है. एक है हमारा रियलम डेटाबेस, दूसरा है हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस, एंड थर्ड वन इज अ रोम डीबी, right? So these are the three different databases that for the offline database we are using it. So here we will discuss
with one of the offline database called RealM. Now RealM database के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो RealM की डिपेंडेंसी है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी पहले। तो उसके बाद हमें करना पड़ेगा, एक लेआउट बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं आपको वाइजर कनेक्ट करके दिखा रही हूँ, through which the application is supposed to be displayed to you. यहाँ पे वो लोड होके दिख रहा है। वाइजर एक मेरा वर्चुअल, हम बोल सकते हैं एक इवेल्युएटर है, इम्यूलेटर सॉरी, कि जिसकी मदद से मैं आपको आउटपुट शो करवा सकती हूँ। जस्ट लेट इट कनेक्ट इट अगेन। I can show you with the mobile assistant. चलो यहाँ पे वो रन हो चुका है, वापस से रन करवा के आपको दिखा रही हूँ। Just a second, my device is disconnected.
So till now, any of the query do you find out? Then just let me know. जब तक मेरा डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, right? We'll start up with this one of the offline database, what we can say the real M databases. For the real M databases, what we have to do is, for the real M databases, we have to create a model, we have to create the adapter, we have to create application configuration file, right? So first of all, what is adapter? We'll discuss first. Adapter, in simple term में अगर मैं बोलूँ तो it is nothing but the one of the container in which all the records will be fetched and display to your application, right? कि इसके अंदर हम सारे हमारे जो भी records है, right, वो fetch करवा के लाएंगे and through adapter it will be transferred to your application, right? So we are creating an adapter, we are supposed to create a model. Now what is a model? यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शंस करने हैं. Now for the database connection, what we have to do is we have to create a model class, right? जिसके अंदर आप क्या specify करोगे model class के अंदर? You need to specify the what we can say the field of your table, राइट? सो जितने भी फील्ड आपको वहां पे टेबल में यूज करने हैं वो सारे फील्ड आपको कहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे? मॉडल के अंदर. वो मॉडल के अंदर जैसे आप उसको स्पेसिफाई करोगे, वो मॉडल के अंदर जैसे भी आप स्पेसिफाई करोगे, then you have to create a getter setter method for that particular variables. So first of all, we'll create a model over here. Before we start with the model, we must have to add a dependency regarding the real-M database. So for the real-M database, we are using a dependency like now the question comes into the mind is, मैडम ये सारी डिपेंडेंसी कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे होती है? कोई प्री डिफाइंड उसका स्पेसिफिकेशन है जहां से हम उसको ले सकते हैं? नथिंग, नो सच प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन, बट इफ you whatever the dependency you want to add into your project, you just find it out on the Google, right? आपको क्या करना है, आपको गूगल पे लिखना है व्हाट, हमें क्या करना है, अभी अपडेटेड डिपेंडेंसी डालनी है, अपडेटेड वर्जन. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिपेंडेंसी फॉर रियल एम डेटाबेस. सो जो भी हमारी अपडेटेड और डिपेंडेंसी होगी, इट विल बी शो ओवर हियर फॉर द एंड्रॉइड स्टूडियो. Right, here is the real-m dependency where you must have to add this, वो भी आपको वहां पे दिखाया जाएगा, right? So I'll add my real-m dependency. Now जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे पास दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है प्रोजेक्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन फाइल और एक होती है मॉड्यूल लेवल कॉन्फ़िगरेशन फाइल. We have to add into both. Some of the dependency we must add into the both of the Gradle files. So यहाँ पे हम हमारी जो भी Gradle फाइल है उसको ऐड करेंगे, दैट इज इनटू मॉड्यूल लेवल डिपेंडेंसी के अंदर. इसको मैं कॉपी कर रही हूँ एंड आई एम एडिंग इनटू आवर फाइल दैट इज ओवर हियर.
इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। And click on sync now. उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा वो हियर आईडी। which is RealM Android. We have to wait till this Gradle process is completed. ये जो ग्रेडल बिल्डिंग हो रहा है वो डिपेंड करता है आपकी रैम साइज पर। if it is very less then it will taking much of time. real कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है पहले तो हमें build डॉट ग्रेडल फाइल जो है उसके अंदर करना पड़ेगा। वहां पे हम आईडी में जाके यहाँ पे कर देंगे। इसका प्रोसेस कम खत्म होगा उसके बाद ही हम कर पाएंगे। सो वी हैव टू वेट टिल देन। It is completed. ID यहाँ पे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे दैट इज realm dash android. Click on sync now. उसके बाद उसकी जो डिपेंडेंसी है दैट वी मस्ट हैव टू ऐड।
जब तक यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है तब तक हम हमारे मॉडल्स बना लेते हैं. The file that we needs to create it, right click on the package, new java file. मॉडल का नाम आप कुछ भी देख सकते हो, मैं नाम लिख रही हूँ मॉडल. Then we need to create an application file, or we can say configuration file, that is also only the java file. The Gradle process is supposed to be built. We have to wait till that completed. Okay, Gradle process हो गया है complete. Now, first of all, we'll complete our content with model file, and then we'll complete it with the Java file, right? So मैं आपको ये application पहले run करवा के दिखा देती हूँ how it will be executed. Output पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हमें actually क्या करना है. मॉडल क्लास के अंदर जैसे मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, जो भी टेबल के वेरिएबल्स या तो फील्ड्स हमें बनाने हैं वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. लेट्स से स्ट्रिंग है नेम एंड पासवर्ड, इंटीजर है दैट इज आईडी, राइट. अभी यहाँ पे मैं उसको एक्सटेंड करवाऊंगी, एक्सटेंड एप्लीकेशन सॉरी रियल एम ऑब्जेक्ट से. मॉडल है ना, तो उसको रियल एम ऑब्जेक्ट से इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा. वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाने के बाद आई क्लिक ऑन जनरेट getter and setter.
तीनों तीन चीज हम जनरेट करवा देते हैं। क्लिक ऑन ओके, सबकी गेटर सेटर मेथड आ जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमें करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा एप्लीकेशन से यहाँ पे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, राइट। दैट इज ऑन क्रिएट मेथड, यहाँ पे आ जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे पहले तो DLM को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। DLM.init, उसके अंदर मुझे करंट कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। DLM.init, उसके अंदर पास करना पड़ेगा कंटेक्स्ट, दैट इज दिस। उसके बाद DLM.get डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, RealM configuration, that is RealM configuration equals to new RealM configuration। पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट पैरामीटर रहेगा दैट इज डॉट बिल्डर, उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर रहेगा आपका डॉट डॉट नेम, that is name of your database, user dot dp dot schema version, by default is 1। उसके बाद आएगा डॉट delete RealM if configuration needed। उसके बाद आ जाएगा that is build, then get default configuration। RealM dot set default configuration, जिसके अंदर मैं पास कर दूंगी RealM configuration का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करवाया है, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करवाया है, किसके साथ, मेरी एप्लीकेशन के साथ। ये अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करवाया, हमने कॉन्फ़िगरेशन का कोड लिखा है सिर्फ। कॉन्फ़िगर हम कहाँ से करवाएंगे, उसको मैनिफेस्ट के अंदर स्पेसिफाई करके उसको कॉन्फ़िगर करवाएंगे। तो वो आपको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दैट इज एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको नेम प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, इसको आपको देना पड़ेगा माय एप्लीकेशन। अब ये जो माय एप्लीकेशन का ये जो डिफॉल्ट डेटाबेस है यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। मैंने डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर दिया है, वो डेटाबेस का जो टेबल है उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करके गेटर सेटर मेथड बना दी है। अब हम बना रहे हैं हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, कोड पे जाएंगे, कंस्ट्रेन लेआउट है जिसको मैं कन्वर्ट करती हूँ लीनियर लेआउट के साथ।
अगेन यहाँ पे मैं उसका ओरिएंटेशन डालूंगी विच इज वर्टिकल। टेक्स्ट व्यू है उसको मैं हटा दूंगी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक दो टेक्स्ट बॉक्स बना रही हूँ विच इज एडिट टेक्स्ट। विड्थ उसकी होगी मैच पैटर्न, हाइट उसकी होगी रैप कंटेंट। यहाँ पे मैं आईडी दे रही हूँ दैट इज सॉरी नेम। यहाँ पे मैं टेक हिंट दे रही हूँ एंटर नेम। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगी दैट इज एडिट टेक्स्ट। अगेन विड्थ उसकी मैच पेरेंट रहेगी, हाइट उसका रैप कंटेंट रहेगा, आईडी विच इज ईडीटी पासवर्ड। यहाँ पे मैं हिंट दूंगी एंटर पासवर्ड। बटन बना रही हूँ, बटन रैप कंटेंट आईडी हम दे रहे हैं उसका btn ऐड। यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करूंगी ऐड। बटन का कलर अगर आपको चेंज करना है बैकग्राउंड का तो आपको सेट करना पड़ेगा बैकग्राउंड टिंट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप यहाँ से हमने जो माई कलर लिया था ना @color माई कलर। तो बटन का कलर ये जाएगा। टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहेगा। उसका फॉर्मेशन चेंज करना है टेक्स्ट स्टाइल विच इज बोल्ड। ऐड हो गया। वैसे मैं यहाँ पे और एक बटन बनाऊंगी दैट इज बटन रैप कंटेंट। यहाँ पे हम आईडी देंगे btn व्यू राइट। अगेन उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम माई कलर से। टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे दैट इज व्यू डेटा। टेक्स्ट कलर रखेंगे हम ब्लैक। टेक्स्ट स्टाइल हम रखेंगे यहाँ पे बोल्ड। ठीक है, आपको इस तरीके का डिजाइनिंग दिखेगा। अभी नॉर्मल दो टेक्स्ट बॉक्स लिए है और दो बटन लिए है। इसको अलाइनमेंट ग्रेविटी सेट कर देते हैं विच इज सेंटर। तो इस तरीके का नॉर्मल दो टेक्स्ट बॉक्स है और दो बटन लिए है, इस तरीके का कुछ लेआउट बना है। अब ये जो हमारे एलिमेंट्स है उसको हमारी एक्टिविटी मतलब जो क्लास फाइल है उससे मुझे बाइंड करवाना पड़ेगा। सो जितने भी एलिमेंट हम एक्सएमएल के अंदर लेते हैं हमें यहाँ पे उसको इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उसको डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए है दैट इज एडिट टेक्स्ट नेम एंड एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। दो बटन लिए हैं बटन ऐड एंड बटन व्यू। अब ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ। अभी हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे दैट इज एडिट टेक्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। मेथड है आर दैट इज रिसोर्स आईडी कौन सा है हमारा दैट इज ईडी टी एडिट नेम। एडिट टेक्स्ट password is equals to find view by id r dot id dot edt
पासवर्ड। अब बटन को भी हमें डिक्लेयर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दैट इज बटन ऐड is equals to find view by id r dot id dot button add, and button view is equals to find view by id r dot id dot btn। अभी हमने सारे एलिमेंट्स को सिर्फ डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन किया है। अभी हम उसकी क्लिक मेथड बनाएंगे, बटन की क्लिक मेथड कैसे बनाएंगे, दैट इज बटन ऐड dot set on click listener उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर की ऑन क्लिक मेथड। यहाँ पे हमें क्या करवाना है, अभी ऐड पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अभी हम करेंगे, सेव करेंगे। सो यहाँ पे हम एक रियल एम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको भी मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा रियल एम ऑब्जेक्ट को। relm dot get instance, relm dot get default instance। relm is equals to relm dot get instance, जिसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा, दैट इज relm डॉट गेट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। अभी मुझे सेव करना है बटन की क्लिक पर, तो दो लोकल वेरिएबल लेने पड़ेंगे, string name and pass name is equals to edit text name dot get text dot to string, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा स्ट्रिंग में, एंड pass is equals to edit text pass dot get text, उसकी भी कौन सी आएगी, टू स्ट्रिंग मेथड। चलो ये लोकल वेरिएबल में मैंने ले लिया, अब हमें उसको कहाँ पे भेजना है, मॉडल पे भेजना है, बट कोई भी ट्रांजेक्शन हम रियल एम से कर रहे हैं तो रियल एम डॉट क्या करना पड़ेगा, बिगिन ट्रांजेक्शन। अभी हमारा जो भी मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज मॉडल एम इज इक्वल्स टू रियल एम डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। वहां पे क्या पास करना पड़ेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मॉडल क्लास का। अभी एम डॉट एम डॉट सेट नेम, उसके अंदर हम पास कर देंगे नेम पैरामीटर, एम डॉट सेट पास, जिसके अंदर हम पास कर देंगे पासवर्ड वाला पैरामीटर, और उसके बाद हमें क्या करना है, कमिट कर देना है, दैट इज रियल एम डॉट कमिट ट्रांजेक्शन। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज दे देंगे। टोस्ट मैसेज इज नथिंग बट हम जो अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाते हैं ना, दैट इज अ टोस्ट मैसेज। टोस्ट
डॉट मेक टेक्स्ट, उसके अंदर पहला पैरामीटर आ जाएगा दैट इज गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर आएगा द मैसेज विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद आ जाएगा आपकी मैसेज की लेंथ एंड देन शो मेथड। तो ये हमने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है विथ रियलएम डेटाबेस। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज आएगी दैट इज आप व्यू, एडिट, डिलीट, लॉगिन फंक्शनलिटी, ये सब चीज आप इसके थ्रू कर सकते हो। दिस इज ओनली द बेसिक डिटेलिंग रिगार्डिंग द ऑफलाइन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो हमने जब भी सेशन शुरू किया था, हमने शुरू किया था एंड्रॉइड से। एंड्रॉइड के अंदर हम दो पार्ट के अंदर काम करते हैं। डिजाइनिंग रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ XML, एंड हमारा बिजनेस लॉजिक रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जावा और द कोटलिन। एंड्रॉइड के अंदर स्टूडियो के अंदर हम एक्टिविटीज बनाते हैं। एक्टिविटीज नथिंग बट दिस वन स्क्रीन ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट, जिसके अंदर हमने अभी फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। जावा के अंदर सारी हमारी बिजनेस लॉजिक वाली जावा फाइल्स होंगी, क्लास फाइल्स होंगी। रिसोर्स फोल्डर के अंदर 4 और फोल्डर रहते हैं विच इज ड्राइबल, लेआउट, मिपमैप एंड वैल्यूज। ड्रॉयबल के अंदर सारी, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल इमेज, बैकग्राउंड इमेज या जेपीजी इमेज, XML फॉर्म में भी अगर इमेज आती है वो सारी आपको डालनी है तो आप ड्रॉयबल फोल्डर में आप डाल सकते हो। लेआउट फोल्डर के अंदर सारी डिजाइनिंग लेआउट्स रहेंगे। मिपमैप के अंदर हमारे शॉर्ट आइकन टाइप के इमेजेस रहेंगे। वैल्यू फोल्डर के अंदर यूजर डिफाइंड बाय डिफॉल्ट 2 प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है, एक कलर डॉट XML और एक स्ट्रिंग डॉट XML। ग्रेडल बिल्डिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट जनरेट होती है। 2 तरीके की ग्रेडल फाइल होती है, एक प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल और एक मॉड्यूल लेवल ग्रेडल फाइल। कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी आपको इनिशियल लेवल पे, मॉड्यूल लेवल पे डालनी है तो आप मॉड्यूल लेवल वाली ग्रेडल फाइल डाल सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि एक्टिविटी हम कैसे ऐड करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, एक्टिविटी में जाएंगे एंड एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करके नई एक्टिविटी ऐड करेंगे। फिर हमने देखी थी स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी। स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी में हमने देखा था स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है, कि जो हम नॉर्मल टर्म में अगर बोले तो जो भी लोडिंग स्क्रीन रहता है ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग स्क्रीन। लैंडिंग स्क्रीन ऑफ योर एप्लीकेशन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्प्लैश स्क्रीन, राइट, जिसके अंदर हमने लोटी एनिमेशन थ्रू एक एनिमेशन ऐड किया और उसके बाद हमने एक ऑफलाइन डेटाबेस के अंदर रियल एम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन देखा और सिंपली इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा के चेक करवाया। So here I am ending my session. Is there any query? Yes, ma'am. We are Yeah, having a few queries from the questioning from the students and one of the question from me. yes, sir. One of the student is asking about the how can we avoid the application is not running. जो ANR होता है ना, application is not running. So how can we avoid that for such kind of application? सी ANR जो होता है उसमें आप देख सकते हो कि लाइक आपका जो एप्लीकेशन, मतलब आपका जो मोबाइल है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन थ्रू अगर वहां से रिस्ट्रिक्ट किया है तो वो पहले तो आपको वहां पे ही चेक करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर फिर भी नहीं होता है तो आपका जो कोड है उसके अंदर आप कोड थ्रू उसको सेट कर सकते हो। Okay, madam. Thank you. And the other question is regarding the toast syntax. How can we modify this? टोस्ट की सिंटेक्स आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के अंदर आप आपका करंट जहां पे भी जिस लोकेशन पे आपको वो कंटेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, वो कंटेक्स्ट मतलब वो लोकेशन आप स्पेसिफाई करोगे जिस एक्टिविटी पे आपको डिस्प्ले करवाना है। सेकेंड विल बी द टेक्स्ट, द मैसेज that you want to show on your activity. The third parameter is the length of your message, which is length long or length short. And then
डॉट शो मेथड से आप अपटोस्ट मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हो. सो यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर मैसेज. जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करवा सकते हो. Okay, ma'am. Just like warning or pop-up messages that can be. Yeah, pop-up message used in only. the- It is nothing but the one pop-up message only. But अगर आपको फिर अगेन इससे आपको अलर्ट बॉक्स के अंदर शो करवाना है तो आप अलर्ट Yes, डायलॉग yes. बॉक्स के अंदर भी करवा सकते हो सेपरेटली, राइट. जैसे हमारे जावा स्क्रिप्ट में आता है ना, हम उसको अलर्ट yes, करवा yes. के चेक करते हैं. We are दिस इज using हाँ, वी आर the यूजिंग like the टोस्ट. kind of pop-up हाँ, boxes. yes, yes. And then one question from me, that is, can we use the multiple launch mode on the same application? Intent filter launch mode, Launch mode, yes, sir. no. So we are going with the standard only. Yeah, we have to go with the one standard. If you directly go with some first of all splash screen activity, then Yes. you can go ahead. We can use the single top, single task as well as Yes, single yes, yes, content. yes. And then you can manage it with the fragments later Okay, on. madam. Okay. Thank you, madam. No other queries from the students. Okay, thank you, sir. Okay, ma'am. Good afternoon, all. I'm Professor Kalyani Adavatkar, Head of Information Technology Department, and I'm here to deliver a vote of thanks. First of all, I would like to thank Mrs. Mansi Joshi for a very practical webinar on Android programming. I'm sure all the students must have benefited from it, and the recording which is there, which will be stored on YouTube, will be used by many for hands-on. Thank you very much, ma'am, for that. I would like Thank to you, ma'am. thank the management of Sigma for providing us a platform to organize this webinar. I would like to thank our principal, Dr. Priyesh Gandhi, for providing guidance and support. I would like to thank Dr. Shivam Upadhyay for his continuous support. Then a special thanks to Dr. Madan, who is the principal of physiotherapy, Sigma Institute of Physiotherapy, for social media and technical support. Last but not least, I would like to thank all the students for their overwhelming response. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. We close this webinar. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.